Hello friends, welcome to Current Affairs discussion on Swayam Pathshala Odisha. Today we'll discuss about the important bills that were passed by the monsoon session of the parliament in the month of September. So the Parliament passes Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020. The Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020 was passed on the September 23rd, 2020. So a bill कौन पहुंची? It included Hindi, Dogri and Kashmiri in the list of official languages of Jammu and Kashmir. That is the Union Territory now after the abrogation of Article 370. And Hindi, Dogri and Kashmiri are included in the list of state official languages. Agur कौन official languages thila already? English and Urdu. English and Urdu already state official languages thila ebong tinita language ebe misila setare Hindi, Dogri and Kashmiri included hela. So the Epidemic Diseases Amendment Bill 2020. What is the features of this bill, amendment bill? Why it is called amendment bill? Because there was an act called Epidemic Diseases Act 1897 that was passed by the parliament to tackle bubonic plague in Mumbai. Okay, it is a bacterial disease. But a plague ହେଇଥିଲା Mumbai रे 1897 रे 1896 ସେତେବେଳୁ ହେଇଥିଲା. So ତାକୁ tackle କରିବା ପାଇଁ ଏଇ Epidemic Diseases Act ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ଥିଲା ସେତେବେଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ପାସ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଡିଜିଜେସ୍ ହୁଏ ଟୁ କଣ୍ଟେନ୍ ଦ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଟେପ୍ସ ନିଅନ୍ତି କିଏ ଆମର ଯୋଉ सरकार विभिन्न स्टेप्स नियंती डिफरेंट पदक्षेप नियंती टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द वायरस ओके जेमति कि कोलेरा स्वाइन फ्लू मलेरिया डेंगू हमर जेमति एबे कोविड 19 जो जो लॉकडाउन हैला सो लॉकडाउन जो हैला से पावर टा किए देछि बाय द पावर्स ऑफ दिस एक्ट माने एपिडेमिक डिजीज एक्ट अनुसार लॉकडाउन कले माने टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द वायरस सो दैट गोटे एरिया रे सेटा कंटेन हेकि रहइबो स्प्रेड करिवनी चारियाडे हैला सो एटा डिजीजेस अमेंडमेंट बिल कोन कहिला व्हाट इज द न्यू फीचर्स ऑफ दिस एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट बिल 2020 टू इंक्लूड प्रोटेक्शंस ऑफ द हेल्थ केयर पर्सनल combating epidemic diseases okay and expands the power of the central government to spread to prevent the spread of such diseases okay so आमे विभिन्न जगह देखियो पाइले जे डॉक्टर्स हेल्थ केयर वर्कर मन को के खराब व्यवहार देखौची मिसबिहेव करूची कि माने हाथ उठे बड़ा बड़ी करछन हेल्थ केयर वर्कर्स मन को तो सेति पई इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस ताको करा गला अंडर दिस एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020 এই ভলিয়া আক্ট जो मन करिवे ताको 3 रु 5 वर्ष पर्यंत जेल दंड मध्ये हेपारे 2 लाख रु 5 लाख पर्यंत जरिमाना मध्ये हेपारे ओके so the next point the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill 2020 the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill 2020 this bill paves the way to establish a state of art institution Ayurvedic institution that is called the Institute of Teaching and Research in Ayurveda ITRA at Jamnagar, Gujarat. Question asibo where is the Institute of Teaching and Research in Ayurveda is planned to be formed okay so is a good question semti tame easily answer kar peribo okay and eita gote aku ei jo bill द्वारा a institution setup hobo and it will be conferred the status of an institution of national importance INI institute of national importance hame kaha ko amar jete सब IITs अछि amar AIMS अछि all Indian Institute of Medical Science okay NITs National Institute of Technologies Indian Institute of Technologies कहले जेमति आइजर हम जेमति ओडिसा रे अछि आइजर बरमपुर okay so these institutions are all come under the institution of national importance जेमति अछि नाइपर National Institute of Pharmaceutical Education and Research okay so NIPER so एमति विभिन्न इंस्टीट्यूट्स को नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस स्टेटस दिया जाइछि एवं ए जो आयुर्वेदिक सेक्टर रे किबा आयुष सेक्टर रे व्हाट इज कॉल्ड आयुष आयुर्वेदिक यूनानी सिद्ध होमियोपैथी ओके सो ए सब जो इंडियन फॉर्म ऑफ मेडिसिन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन ता ऊपर रिसर्च को प्रमोट करिया पे ता ऊपर विभिन्न
टेक्नोलोजी किंबा आगु भल रिसर्च केमती हो ओके मेडिकल फैसिलिटीज केमती डेवलप हो ए फील्ड रे होलिस्टिक केयर जाको होचे तो सेही ऊपर प्रमोट करिया पे तीनोटी इंस्टीट्यूट गुजरात रे अछंती ताको मर्ज करिकरी गोटे करागला कोन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद. Okay, so what are the three institute? Institute of Postgraduate Teaching and Research in Ayurveda, yeah, that is in Gujarat, Sri Gulab Kunvarda Ayurvedic Mahavidyalaya, and Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, and also Maharshi Patanjali Institute for Yoga, Naturopathy Education and Research. That will be made a part of the Department of Swasthavrita of the proposed ITR. Okay, it will be the first institution under the Ayush, okay, to have got the INA status, that is the Institute of National Importance status. The Aircraft Amendment Bill 2020. This bill seeks to convert aviation agencies like DGCA, that is the Directorate General of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security BCAS, and Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB into statutory bodies. What is called statutory bodies? Like University Grants Commission, okay, and SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, जे कि सब शेयर मार्केट्स ये सब जो रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करे माने गोटे गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी जे कि निजर माने जो डिपार्टमेंट जो सब ता अंडर रे अछंती तार रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर परिबो फ्रॉम टाइम टू टाइम बट अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट एंड माने सेंट्रल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अछि तारी भितरे ही बट दे आर इंडिपेंडेंट टू वर्क एंड सब छोट छोट जिनस मिनिस्ट्री अप्रूवल दरकार पड़ेनी स्टैट्यूटरी बॉडी जो पाखे थाए ता पाखे ऑटोनोमस पावर्स किछटा थाए ओके सो सेमती एई जो बिल एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल एई जो तीनटी संस्था अछंती जेमति कि डीजीसीए हमर जो सिविल एविएशन एयरपोर्ट रे काकू को फ्लाइट को कोन लाइसेंस मिलिबो न मिलिबो एई सब एई ऑर्गेनाइजेशन सेटा को देखे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी सेमती हमर जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी अछि एयरपोर्ट सिक्योरिटी हे गला किबा प्लेन जेतेबेले जाउची तार जो सिक्योरिटीज इंचार्ज ए सब पई ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एवं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जते सब सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स जा सब रुहे सिविल एविएशन सेक्टर रे सेही थि पई ए डिपार्टमेंट सेटा को देखे देखे तो एई तीनोटी संस्था को स्टैट्यूटरी बॉडी हिसाब रे कन्वर्ट करिया पई तो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 तार मेन फीचर्स ओके so under its implementation जदि कोनोसी लोक violation करूची by carrying arms ammunitions and explosives and other banned goods so there will be fine and they will attract fines up to 10 lakhs to rupees 1 crore okay and it will also this bill also prohibits the illegal construction around the airports चारिकटे केते गुटे जागा को माने क्लीन रखा जाए सो दैट किछि गुटे मिसअप जेमती हबो कोनोसी क्षय क्षति हबनी कोनोसी लाइफ लॉस हबनी बट जदि किछि इलीगल कंस्ट्रक्शन माइनिंग एक्टिविटीज एयरपोर्ट चारिकटे चालुची then they will attract fines okay so the next bill is FCRA amendment bill 2020 this is one of the important bills a foreign contribution regulation amendment bill it amends foreign contribution regulation act 2010 ର act को amendment କରୁଛି FCRA amendment bill 2020 এই act under रे এই जो amendment bill under रे NGOs cannot use more than 20% of the foreign contributions to meet their administrative expenses like paying salaries okay and a act under रे judges public servants or employees of any government owned or controlled companies okay ଯେମିତି କି public sector undertakings PSUs okay so PSUs under रे जो employees माने public servants ଆମର जो अछंती IAS officers and all judges okay so they will not be permitted to accept any foreign donations and the public servant kiye jodi tar definition the definition of a public servant will be made as per the section 21 of the Indian Penal Code IPC okay so it prohibits individuals or NGOs from transferring their foreign contribution to a third party earlier kon thila je gote NGO संस्था जदि तार चाहूची they can transfer their foreign contribution to other FCRA certificate holders okay so aguru jemti thila eta kono 50% thila 50% of their foreign contributions they would spend for administrative expenses but eta ko ebi reduce kariki 20% kar diya gala so any new registration for an FCRA certificate
or a renewal would require Aadhaar number of the office bearers. जेते सब suppose board of directors थिबे से NGO रे कि office bearers जे थिबे main office bearers तांकर Aadhaar card requirement दरकार if any organization is is doing any new registration for for to get an FCRA certificate. Okay, so in case of foreign office bearers, they would need to furnish the passport or OCI card. आर मेन जदि कहबा एटा कोन पई पास करा जायछि जो एक्टिविज्म ना रे जो विभिन्न प्रकार रो धंदा चलछि जेमति कि कन्वर्सन एक्टिविटीज ओके सो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस से माने कोन करछंती सब क्रिश्चियन कन्वर्सन करछंती बहुत जगह रे देखाइछि 13 टा एनजीओ को एक्चुअली बैन करा जायतिला ए सेप्टेम्बर yearly week रे 13 टा एनजीओ मन को बैन करा जायतिला since they were converting Hindus from Hindus to Christians okay so एमती बहुत गुडे एनजीओ संस्था से माने विभिन्न प्रकार एक्टिविज्म ना रे गोटे एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी मध्य करूचंती देखा जायछि सो आगुरु हमर जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अछि सेही अंडर रे भी बहुत एनजीओस मानन को बैन करा जायछि सो एई सब एक्टिविटीज को चेक करिया पई जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आसुची इन ऑर्डर टू डिस्टेबलाइज आवर कंट्री ओके सो सेही सब जिंस को चेक करिया पई एई FCRA Amendment Bill 2020 लागू करा जायछि by the Government of India. So similarly, the Banking Regulation Amendment Bill 2020. A Banking Regulation Amendment Bill under रे जो एते सब हमर urban and multi-state cooperative banks रहिछन्ती they will come under the purview of the Reserve Bank of India regulations. They will they have to follow the RBI guidelines. Already RBI guidelines थिला RBI रो monitoring किबा power थिला बट किछिटा क्षेत्र रे थिला किंतु एबे RBI रो टोटल माने रेगुलेशन तार जो फीचर्स ए सब कॉर्पोरेटिव बैंक्स माने को मध्य फॉलो करिया को पड़िबो रूल्स एंड रेगुलेशंस ओके कोऑपरेटिव बैंक्स माने जेमति कि हमर ओडिशा स्टेट रे ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक OSCB बैंक अछि तो ए सब एक्चुअली सिंस कोऑपरेटिव बैंक्स आर एक्चुअली द स्टेट माने इट आउट स्टेट अफेयर्स ओके स्टेट अफेयर्स ताको कहबा because cooperative societies किंबा cooperative banks से माने सबु registration करथांदी state cooperative societies act under रे registration करथांदी but RBI का कंट्रोल करे जते हमर scheduled commercial banks रहिले तापरे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जते सब बड़ बड़ बैंक रहिले तो से मान को एक्चुअली आरबीआई कंट्रोल कले तो सेटा गोटे सेंट्रल अफेयर्स हेला बट ए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बा कोऑपरेटिव बैंक्स दे आर ऑल स्टेट अफेयर्स बट सिंस this banking institutions actually सेतरे public रो money involved रहउची they are giving loans they माने सेठी fixed deposit करि पारुचंती investment करि पारुचंती विभिन्न ये जो schemes रे public माने तो सेति पे तांकर money को safeguard करिया पई ए decision निया जायछि by the central government so RBI ए जो बैंक एबे जो banking regulation amendment bill हला that may RBI may prescribe conditions on qualifications for the employment of the chairman of cooperative banks. RBI decide kari pare je what should be the qualification or experience criteria for a man to be a chairman of the cooperative bank. Okay, so RBI has also power to remove a chairman if the RBI thinks the person is not deemed fit or proper to be on the such position okay so it may issue directions to reconstitute the board of directors को change करिया पई मे बी RBI directions दे पारे okay and RBI also may supersede the board of directors करो जो decision जो cooperative bank रो जो BOD थिबे तांकर जो decisions को मध्य RBI overturn करि पारे in after consultation with the state government because since it is a state affair actually so सेति पे state government रो consultation RBI रो नियति नबा जरूरी okay so the next bill is three labor laws passed by the parliament in this monsoon session are these three labor laws are the code on occupational safety health and working conditions the industrial relations code and the social security code ये तीनोटी labor laws actually को कुआ जाय so ये तीनोटी labor laws pass करचंदी पार्लियामेंट द्वारा पास हेछि द कोड ऑन ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस माने जो हमर सब इंडस्ट्रीज अछंती फैक्ट्रीज अछंती सेठी सब जो एम्प्लॉइज काम करचंदी किबा जो हेल्थ वर्कर्स समस्त काम करचंदी तो तांकर जो सेफ्टी कंडीशंस हेल्थ कंडीशंस वर्किंग कंडीशंस केमति हवा दरकार ता ऊपर एक्चुअली बिल फोकस करछि किबा ई एक्ट फोकस करछि
It aims to create a national occupational safety and health board under the OSH code and a social security fund जदि किसी problems होची health care problems होची से जो employees मानकर तो ये social security fund रू किछटा fund divert करी हबो to meet the expenses. Okay, so similarly the industrial relations code, it have the important point under the industrial relations code. Now the government have planned to माने जो industries रे 300 workers ରୁ कम workers काम କରୁଥିବେ, so they can easily terminate anyone or easily hire anyone. Okay, माने free, they are free or they are flexible, the employers are flexible for hiring and firing workers without government permission. ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ କୁ ମାନେ ଫାୟାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଥାଏ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ କିମ୍ବା PSU ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ବଟ୍ ତାର ଗୋଟେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି। ବଟ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଇଏ ରହୁନି, ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲେବର ଲଜ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ କାମ କରୁନି, ସୋ ତାକୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁଲେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ତ ସେଇ ସବୁ ଲଜ୍ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ୍ସ କୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହଉଛି, ହବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ବଟ୍ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 300ରୁ କମ୍ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। Okay, so the social security code ଯେମିତି ଏଠି କହିଲି social security fund ଗୋଟେ health care and working conditions rule ହିସାବରେ ମାନେ include ହେଲା। ସେମିତି social security code ଯଦି ଦେଖିବା, the social security code will extend the scope of the employee state insurance corporation जो ESIC under ରେ registration କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ workers and staff ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା extend କରାଯାଉଛି। and ମାନେ ଦେଶର 740 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ESIC ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ EPFO ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସୋ ସେଇ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯଦି ବା 20ଟା ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଇଭେନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ registered under the EPFO. So there are some important bills in the agricultural sector that was passed by the parliament in this monsoon session. এই তিনোটি বিল বিষୟରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ତ ତାର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। So thank you for today's session. If you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.